गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल असी किया सी कि अगर एक्स कंटीन्यूज रैंडम वेरीएबल आ तो पीडीएफ स्मॉल एफ एक्स गिवन आ एंड वी आर टू फाइंड कैपिटल एफ एक्स, देन कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स. Because x is a continuous random variable, then what to do? Minus infinity to x, we will integrate fx dx, and conversely, if small fx is given, if capital fx is given and we are to evaluate small fx, then small fx is equal to derivative of capital fx. then फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, capital fx ਨੂੰ differentiate ਕਰ ਦਾਂਗੇ and we will get small fx. for example, question number 12, the distribution function of a continuous random variable capital X is given by, here we are given capital Fx, which is 1 minus 1 plus x into e to the power minus x for all x greater than equal to 0. Then find PDF of x and we are to evaluate small fx. Then what we will do? We will differentiate capital Fx with respect to x. डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करांगे थे एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना, जो एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स. नाउ डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0. अप्लाई प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस first function as it is derivative of second plus second as it is derivative of first, negative of 1 plus x into e to the power minus x plus e to the power minus x means minus e to the power minus x into e to the power x plus e to the power minus x. दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैंसिल कर देंगे. So small fx is equal to x into e to the power minus x. So this is our PDF where x is greater than 0. अगर conclude करिए greater than 0 है then small fx is equal to this one. Otherwise elsewhere small fx is equal to 0. Now question number 13 is the distribution function for a random variable capital X is given by, here again we are given capital Fx 0 when x is less than 0 and 1 minus e to the power minus 2x when x is greater than equal to 0. So सब तो पहला तो असी की करना, we are to find PDF small fx which is equal to derivative of capital Fx. ये डेरिवेटिव ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ x is when x will be continuous random variable. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ small fx ਆ ਗਿਆ, second question is we are to find probability when x is greater than 2. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ probability find ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ that can be evaluated only by small fx. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 to infinity ਕਿਉਂ up to infinity ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ greater than equal to 0 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ small fx ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ greater than equal to 0 ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ 0 to infinity, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ infinity ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ from 2. So we will integrate fx
dx from 2 to infinity. And next question is, third part is, we are to find probability -3 less than x less than equal to 4. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ -3 to 4 fx dx, ਬਟ fx ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? 0 ਤੋਂ. So we will break this one, -3 to 0 plus 0 to 4, and -3 to 0 value of fx is 0, small fx, and 0 to 4 ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ small fx ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ. So this is 0. So you are to evaluate fx dx, integration of fx dx from 0 to 4. Okay. Now next question is, small fx is given, question number 15. Small fx is given. First part is, find the value of small a. Find the value of a. Because small fx is given, then what to do? -infinity to infinity fx dx ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 1. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ pdf ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, fx dx greater than equal to 0 for all x, and second one is, ਅਗਰ ਤਾਂ x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸਾਨੂੰ a to b given ਆ, then a to b fx dx इंटीग्रल ऑफ fx dx कितना आएगा? 1 आएगा. बट अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंटीग्रल नहीं भी गिवन, अगर सॉरी सैंपल स्पेस नहीं गिवन कि a to b आ, then ਅਸੀਂ नॉर्मली ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ -infinity to infinity fx dx ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 1. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पर्टिकुलरली गिवन नहीं है, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ गिवन नहीं है, then ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? -infinity to infinity fx dx ਨੂੰ 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ fx ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾਓ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ -infinity to 0, 0 to 1, 1 to a to infinity, -infinity to 0, 0 to 1 plus 1 to a plus a to infinity, and -infinity to 0 function is 0, also a to infinity function 0 is equal to 1. So what to do? 0 to 1 fx dx plus 1 to a fx dx ਦੀ integration is equal to 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ. equation solve ਕਰ ਲਓ, we will get the value of a. फिर उस तो बाद सेकंड पार्ट गिवन आ, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. उस तो बाद असी की करना? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना. सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मीन्स वी आर टू फाइंड कैपिटल एफ एक्स. ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਐਕਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ कि प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0.8 टू 0.6 है. देखो जो फर्स्ट पार्ट दे विच तुसी ए दी वैल्यू इवैल्यूएट कीती आ, वो ए दी वैल्यू तुसी सबस्टिट्यूट कर देनी आ. फॉर एग्जांपल अगर ए दी वैल्यू तुहाडे कोल 1 आ गई, then what to do? प्रोबेबिलिटी 0.8 less than x less than 1 नहीं आ सकती. suppose 1.5, then 1.5 into 0.6, 0.9, then we will integrate fx from 0.8 to 0.9.
with respect to x. Now next is question number 19. Let x be the random variable having the PDF small fx is equal to small fx is equal to 12x square into 1 minus x. X lies between 0 and 1. Otherwise fx is equal to 0. We are to find the mod of the distribution. Mod of the distribution find करना. सब तो पहला तो अगर असी mod की गल करिए, now if we talk about mod is that value of x at which the PDF has maximum value. x ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, x is that value of for example at x is equal to a, we know that here we can see that fx has maximum value. Function has maximum value at x is equal to a. So therefore capital X is equal to a is mod of distribution. Okay. So ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ find ਕਰਨਾ? We are to find the value of x where small fx is मैक्सीमम. सो बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ये तुसी +2 च भी किया होया मैक्सीमा का क्वेश्चन. एक तुहाडे कोल डबल डेरिवेटिव वाला कॉन्सैप्ट हुंदा सी, फाइंड द मैक्सीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स या मैक्सीमा का पॉइंट फाइंड करना. तो यूजिंग डबल डेरिवेटिव किदां करदे सी? एफ एक्स गिवन हुंदा सी, सब तो पहला असीं फाइंड कर देंदे सी एफ डैश एक्स. After that double derivative of fx. Now after that we put fx is equal to 0 and from that we find the value of x. a और b जो भी तुहाडे को सपोज करो एक या दो वैल्यू जिन्नियां भी आ गई, फिर वो 1/1 सब्सटीट्यूट करते सी डबल डेरिवेटिव च. सो जिस पॉइंट ते तुहाडे कोल डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जांदा सी, एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्लियरली एफ डबल डैश इज नेगेटिव, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए इज मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. एक्स इज इक्वल टू ए इज मॉड, क्योंकि ए दे उपर एफ एक्स की मैक्सीमम वैल्यू आ रही है. ठीक है. सो यही क्वेश्चन असी इत्थे करना. सो सेम तुहाडे कोल डबल फंक्शन गिवन आ, स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स. मीन्स 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए माइनस 12x क्यूब. सो जिदा +2 च किया सी, सब तो पहला असी इहदा सिंगल डेरिवेटिव करांगे. 24x माइनस 36x स्क्वायर. उस तो बाद डबल डेरिवेटिव किया, दिस इज 24 माइनस 72x. नाउ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. सो 24x माइनस 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So here x is equal to 0 or 2/3. So we have 2 points, x is equal to 0 and x is equal to 2/3. Now 1/1 put these 2 points in double derivative of fx. Now double dash 0
This is 24 which is greater than 0, and f double dash 2 by 3, 24 minus 72 into 2 by 3, 24 minus 48 which is minus 24, which is less than 0. So therefore x is equal to 2 by 3 is mod of the distribution. Mod of the distribution. ओके सो ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ mod. ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਨ ਆਏਗਾ. ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਮੀਡੀਅਨ. So median is that value of x. Median is that value of x which divides whole the distribution into two equal parts. x ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ two equal parts ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ. that value of x is called median of the distribution. Total probability 1 आ. Total probability we know that कि total probability 1 ਹੁੰਦੀ ਆ. We are to find the value of x. ਅਸੀਂ ਉਹ value find ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ point ਤੇ probability, ਜਿਸ point ਤੱਕ probability ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ half ਆਵੇ. Suppose ਕਰੋ a to b ਅਗਰ sample space ਆ x ਦੀ value a to b, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ value find ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ point ਤੱਕ probability equal ਆਵੇ. Means x is equal to m, where probability a less than x less than m is equal to probability m less than probability of x, where x lies between m to b. अगर सैंपल्स अगर x की वैल्यू साडे कोल की है a to b, अगर असी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी की गल करिए then m is minus infinity to m, fx dx is equal to m to infinity fx dx. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, और we can write it as कि minus infinity to m fx dx is equal to 1 by 2. ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ m ਦੀ, that will be the median. ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅਗਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ when x less than m is equal to probability x greater than m. We are to find the value of m. So clearly m ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ probability ਤੇ m ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ probability ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ same ਹੋਵੇ, it means m is the median. So what to do? Minus infinity to m is equal to m to infinity. बट इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 to 1 ਆ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, 0 to m is equal to m to 1 fx dx. ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ that will be the median. Now question number 21. fx is given 3x square 0 to 1, otherwise it is 0. We are to find the median. So because x is starting from 0
up to 1, then we have to find the median. So we can write it as 0 to m fx dx is equal to m to 1 fx dx. Either we will use this one equation, or you can use 0 to m fx dx is equal to 1 by 2, or या ਤੁਸੀਂ के भी यूज कर सकते हो कि m to 1 fx dx is equal to 1 by 2. ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ. ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ m to 1 fx dx is equal to 1 by 2. now so m to 1 3x square dx is equal to 1 by 2. इंटीग्रेशन की है साढ़े को आ गया एक्स क्यूब m to 1. सो दिस इज 1 माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 1 by 2. सो m क्यूब इज इक्वल टू 1 minus 1 by 2 which is equal to 1 by 2. So m cube is equal to 1 by 2. So therefore m is equal to cube root of 1 by 2. So in this way we can find the median m of the distribution.